कल हमने देखा एक टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अरशद शरीफ साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ब्रेक किया गया। ठीक है, ये खबर है, उन पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, जो भी एलिजिड रिपोर्ट है, बतौर सहाफ़ी अगर वो आप तक पहुंच गई थी तो वो टेलीविजन पे दिखाने के बहुत से सलीके और करीने होते हैं। उस ख़ानदान को जिसमें ख़वातीन को भी नहीं मालूम किस एक्सटेंट तक अरशद की जो मौत है उसमें टॉर्चर है या नहीं है, आप टेलीविजन स्क्रीन्स पे वो इमेजेस नहीं चला सकते। खानदान की कंसेंट के बगैर, उनकी सेंसिटिविटीज़ के बारे में सोचे बगैर ऐसे आप अब किसी के भी प्यारे की तस्वीर चलाकर उनको तकलीफ दे रहे हैं। अगर आपने खबर चलानी है तो तस्वीर की बजाय सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तलाश में उनकी वालदा कभी अदालत में जा रही हैं, कभी इंतजामिया के पास जा रही हैं, कभी पिम्स अस्पताल के चक्कर लगा रही हैं, उनको वो रिपोर्ट नहीं मिल रही। अगर आप तक वो पहुंच गई है और अगर आपने बतौर सहाफ़ी वो बड़ी ज़रूरी है ब्रेक करनी, तो उसको ट्रीट भी सेंसिटिवली किया जा सकता था। आज मैं गिद्धों के बिहेवियरल पैटर्न के बारे में पता नहीं क्यों पढ़ रही थी और मैंने जो देखा और उनके बारे में जो पढ़ा वो ये था कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त नहीं खाते हैं, यानी कि वो अपनी बरादरी को नोच नोच के जिस तरह वो मशहूर हैं अपनी इस बिहेवियर में, वो अपनी बरादरी के साथ ऐसा नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम अपनों को भी नहीं छोड़ते, चाहे उनकी मौत भी वाकया हो जाए। बहरहाल ये जो पूरा मामला है ये मजीद मशकूक हो गया है। ये जो टॉर्चर के इल्जामात है कि केन्या में आने वाली जो मंजर आम पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी ऐसे ही दावे किए गए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने आज अपने खिताब में इससे मुतालिक जो अहम सवालात उठाए हैं, जरा ये सुनिए। जो अरशद शरीफ से हुआ है, जो वीडियो दिखाई गई है टीवी प्रोग्राम पे कल, मेरा पहला सवाल ये है कि एक टीवी एंकर के पास कैसे वीडियो आ गई, जबकि उसकी वालदा जो पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स मांग रही हैं उनके पास तो नहीं आई। और मेरा नंबर 2 सवाल ये है, कौन अब कीनिया से क्यों नहीं इन्होंने कीनिया फौरी तौर पे लेटर लिखा कीनियन अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए पूछने के लिए कि शुरू का तो बयान ये था कि जनाब वो रॉन्ग आइडेंटिटी पे मारा गया है, और अब वाजे हो गया है कि ये एक प्लान करके तशद्दुद किया इसके ऊपर, उसके बाद गोली मारी गई। वो कौन था जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी अरशद शरीफ की राइटिंग से? कौन था जिसको खतरा था उससे? आपको बताएं कि टेलीविजन पे ये विजुअल्स चल गए, सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, व्हाट्सएप ग्रुपों से होते हुए उस खानदान तक पहुंच तो गए हैं, लेकिन उनके घर वालों को अभी तक, जब तक हम इस सेगमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है। वो बड़ी प्राइवेट फैमिली है, मीडिया पे आना पसंद नहीं करते, उस हवाले से बात नहीं करते, लेकिन बीबीसी को उन्होंने जरूर आज अपना इस हवाले से मौकफ रिकॉर्ड कराया है। बीबीसी की स्टोरी में उनकी फैमिली क्या कहती है ये आपको हम पढ़ के सुना देना चाहते हैं। पूरे कल के वाक़े के बाद वो कहते हैं, बीबीसी से बात करते हुए उनके अहले खाना ने कहा है कि केन्या से आने वाले दस्तावेजात में कागजात की नकल तो मौजूद है जबकि असली दस्तावेजात नहीं है, जबकि लिफाफे के साथ जुड़ी चेक लिस्ट में असल डॉक्यूमेंट्स के होने की तस्दीक की गई है। आगे वो मजीद कहती हैं, जो बीबीसी की अपनी टीम है, कि उन्होंने ये लिफाफा और दस्तावेजात देखी जिनमें असल कागजात मौजूद नहीं थे, और जो नकल फराहम की जाती है उनमें से भी कई सफ़ात असली कागजात की नकूल की बजाय मोबाइल फोन से ली गई तस्वीर के प्रिंट्स थे। अरशद शरीफ के अहले खाना के मुताबिक उन्होंने इस सिलसिले में नैरोबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने से राब्ता किया और उनसे असली दस्तावेजात और लिफाफे के खुले होने से मुतालिक इस्तफसार किया, तो सफारत खाने के एहलकारों ने हमें बताया कि सफारत खाने से असली दस्तावेजात पर मुश्तमिल मोहरबंद लिफाफा मैयत के हमरा भेजा गया था, इसलिए हम नहीं जानते कि यह लिफाफा नैरोबी एयरपोर्ट पर खोला गया या दोहा में। ख्याल रहे कि खानदानी जराये के मुताबिक अरशद शरीफ की मैयत कम से कम 9 घंटे दोहा एयरपोर्ट पर रही है और लिफाफे पर मौजूद रिसीविंग लेटर के मुताबिक ये दस्तावेजात मैयत के हमरा नहीं थे। अरशद शरीफ के अहले खाना की जानिब से बीबीसी को दिखाए गए लिफाफे पर लगी मोहर खुली हुई थी, जबकि इसके ऊपर चस्पा सर्टिफिकेट पे 2 ऐसे नकात भी कंफर्म किए गए थे जिनमें यह दर्ज था कि उन्हें वसूल करने वाला तस्दीक कर रहा है कि लिफाफा मोहरबंद है और उसमें मौजूद दस्तावेजात असली हैं। अहले खाना के मुताबिक उन्हें जब ये दस्तावेजात दी गईं तो उन पर ये तमाम निशान भी मौजूद थे, जबकि लिफाफे के अंदर मौजूद एक कागज की पुष्ट पर पेन से उनके एक फैमिली मेंबर का नंबर लिखा गया था, जो उस नंबर से मुख्तलिफ था जो केन्या से जारी लेटर में प्रिंट किया गया था।
اب ایک اور سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ اگر تشدد کے نشانات تھے تو کیا خاندان والوں کو معلوم تھا, وہ اس پہ چپ کیوں رہے, سوالات کیوں نہیں اٹھائے؟ تو اس کو بھی کلیئر کر رہی ہے یہ فیملی. اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دے ویری پرائیویٹ پیپل, وہ میڈیا پہ آ کے بات نہیں کرتے لیکن مجبور کر دیا گیا ہے بار بار کیمپینز اور چلا کر ان کے خلاف کہ ان کو اپنا موقف کلیئر کرنا پڑ رہا ہے. ارشد کی اہلیہ سمیہ نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کے وقت انہیں میت دکھانے کے لیے لے جایا گیا, تاہم ان کے مطابق یہ وقت اس قدر مشکل تھا کہ اس میں محض کچھ لمحوں کے لیے ان کا چہرہ دیکھ سکی اور پھر پیچھے ہٹ گئی. میں نے ان کے جسم کے باقی حصے نہیں دیکھے, میں چہرہ بھی صرف اس لیے دیکھنے گئی کہ مجھے عمر بھر یہ پچھتاوا نہ رہے کہ اپنے شوہر کا آخری بار چہرہ نہیں دیکھ پائی. انہیں اس حالت میں دیکھنا اتنا تکلیف دہ تھا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہاں موجود تمام افراد کو تصاویر لینے سے منع کر دیا تھا. ان کے جو دوسری اہلیہ ہیں صحافی جویریہ, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ارشد کی جو چھاتی کا اوپری حصہ اور چہرہ انہیں دکھایا گیا تھا, اور انہوں نے کہا میں اتنے صدمے میں تھی کہ مجھے خیال نہیں آیا کہ میں ڈاکٹر سے کہوں کہ مجھے ان کا پورا جسم دکھایا جائے, تاہم ان کے سینے پر گولی کے زخم کے سٹیچز اور ان کے چہرہ اور سر میں نے دیکھ لیا تھا. سو اتنے بڑے صدمے سے جب یہ فیملی گزر رہی تھی تو ان کے مطابق انہیں نہیں معلوم تھا کہ ارشد کس کرب سے گزرے ہیں. اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اگر یہ ٹارچر کی بات درست ہے, لیکن یہ تصاویر جو کہ خاندان والوں نے خود نہیں لی, یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو خاندان والوں کے پاس خود نہیں ہے, یہ میڈیا کے ہاتھ لگ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ میڈیا سے, سوشل میڈیا سے, واٹس ایپ تک ہوتے ہوئے ان کی والدہ صاحبہ, ان کے بچوں اور ان کی بیوی کے کو دیکھنے کو ملتی ہیں. کتنی بڑا صدمہ, کتنی بڑی بجلی گرتی ہے. ان کے خاندان کے, ان کے بچوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا. کیا گزرے گی ان کے چھوٹے چھوٹے جو بیٹے اور بیٹی ہیں ان کے اوپر, بالکل خیال نہیں کیا گیا. اور یہ بڑی زیادتی ہے ارشد کے ساتھ, کیونکہ یہ ایک صحافی کی بات نہیں ہے. آج یہ ارشد ہے تو کل کوئی اور ہوگا. آج اگر لکیر کے اس پار ارشد مارا جاتا ہے تو حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا, کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بھی کوئی آواز اسی طریقے سے اٹھا رہا ہوگا. تو صرف یہ ارشد کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہلے پاکستان میں ہونے والا واقعہ ہے اور بڑے بوجھل دل کے ساتھ اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا. تو اس کے روکنے کے لیے جو ارجنسی, جو کمٹمنٹ, جو انٹیگریٹی صحافی برادری سے ریکوائرڈ ہے اپنے فیوچر, اپنی بقا کو انشور کرنے کے لیے, اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. بہرحال پوسٹ مارٹم رپورٹ جو کینیا کی ہے وہ منظر عام پہ آ گئی ہے. ہمارے ساتھ برائن اوبویو موجود ہیں, جرنلسٹ ہیں, شروع سے ہی پہلے دن سے کینیا میں جو رپورٹ ہے اور اس پورے معاملے کو پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, ان سے بات کریں گے. Thank you for joining us, Brian, and we are very thankful to the Kenyan media who have kept a hawk's eye on this issue, and you have really raised very valid questions, and based on that, now it's almost established that even our own government has agreed to the fact that Arshad was killed deliberately. It was not a mistaken identity case. However, now there is another complication, Brian. There was an autopsy report splashed on Pakistani screens. It showed that Arshad was brutally tortured before being killed. So I just wanted to know about the Kenyan post-mortem report. Has it come out? Has anyone seen that post-mortem report? And what does that say about Arshad's death? Well, the Kenyan report does not talk about the torture, but the report talks about a fingernail or one or two that were actually removed for DNA testing. You know, this is basically about fingernails are known medically or scientifically to basically grasp a lot of material here and they are most of the time used to get DNA of where people touched or what they got in contact with. So during the post-mortem in Kenya, a part of the liver was removed for toxicology. Sections of the blood sample, part of the blood sample was taken. We also see from that report that a fingernail or two have been removed also to understand the aspect of DNA if the deceased got in touch with anyone. So those two fingernails that went missing were taken for the DNA testing as per your assessment. So the autopsy report that is allegedly being shown here, it says that his ribs were broken, his fingers were broken. Does Kenyan report mention that?
The Kenyan report does not talk about that, and that's why I wanted us to also go slow on part of these, because you see, unless the doctors who are conducting these post-mortem reports come out and declare that that is their finding, because it was not even the physical finding of the doctors who are back here in Kenya. Right now, this is a matter that is being viewed from a very sensational point of view, and it will be important that we stick to facts and facts alone, because once you start to see a lot of things coming up, it helps with the cover-up. It helps people to run away from the truth and start concentrating on the sideshows. Why am I saying this? I may not be a doctor, Memon, but it is not scientific. It is not scientific for a doctor or anyone to actually say how long someone was tortured. You know what I mean? Yeah. I saw in that report. Yeah. I saw in that alleged report that Arshad was tortured. Yeah. That he was tortured for at least 3 hours. That is not Yes. a scientific finding. There's no way anyone would know that. Okay, so that was going to be my next question. That can the police over there identify the duration, that missing time between his death and the body surfacing up, because that is what is being alleged in this report, that he was tortured for 3 hours. So you're saying that there is no evidence of that. So the Kenyan report does not, the results of the Kenyan report does not match the outcomes of the alleged Pakistani report. So there is a difference over there.